This is the data of 27th of April. Total confirmed cases, we have 29,458. Total death occurred till today is 939. So here the case fatality rate will be 939 divided by 29,458 multiplied by 100. So it will come around 3.18%, approximately 3.2%. So case fatality rate here is 3.2%. मीन्स ये जो रिपोर्टेड केसेस हैं 29,458 जो कि लगभग 6 लाख पॉपुलेशन को टेस्ट करके आए थे, तो ये CFR 3.2% जो निकला है ये मात्र उतने पॉपुलेशन के लिए है, लेकिन टोटल 130 करोड़ जनता है भारत की, वो टेस्ट नहीं की गई है। तो मोर्टेलिटी रेट कैसे निकालेंगे? ये CFR जो केस फर्टिलिटी रेट हमने निकाला था 3.2%, ये आया जब 6,65,819 लोगों का हमने टेस्ट किया था और उसमें से 29,458 केसेस पॉजिटिव पाए गए थे। देखिए लगभग 6 लाख टेस्टों में से 29,000 पीपल जो है पॉजिटिव पाए गए हैं और ये CFR सिर्फ इंडिकेट करता है 6 लाख के पॉपुलेशन के लिए। 130 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की है, तो 130 करोड़ पे टेस्ट नहीं हुआ है। तो देखिए मोर्टेलिटी रेट इस केस में कैसे फाइंड करते हैं। जब लगभग 6 लाख पॉपुलेशन में से लगभग 29,000 केसेस जो हैं पॉजिटिव पाए गए, तो यानी कि जो इंसिडेंस है हमारे यहाँ कन्फर्म केसेस का वो कितना है निकाल देते हैं। इंसिडेंस रेट ऑफ कन्फर्म केसेस, इंसिडेंस रेट ऑफ कन्फर्म केसेस यहाँ हम ऐसे निकालेंगे कि 6,65,819 टेस्ट करने पे 29,458 केस पॉजिटिव आते हैं। 100 टेस्ट करने पर कितने कंफर्म केसेस आएंगे? सो वी विल फाइंड इट बाय dividing 29,458 by 6,65,819 multiplied by 100, it comes to be around 4.4%। मतलब अगर हम 100 टेस्ट करेंगे तो उसमें से कंफर्म केसेस कितने आएंगे? 4.4। तो यहाँ इंसिडेंस रेट हो गया कंफर्म केसेस का 4.4। सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अप्रॉक्सीमेटली लेट्स अज्यूम टू बी 130 crores। सो अगर 130 करोड़ पॉपुलेशन पूरा टेस्ट किया जाएगा तो वहाँ इंसिडेंस ऑफ कंफर्म केसेस क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। एज वी नो कि जब 100 टेस्ट करने पे 4.4 केसेस पॉजिटिव आते थे, मतलब पर 100 इंसिडेंस जो था 4.4 था, तो 130 करोड़ में आएगा 130 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 4.4 डिवाइडेड बाय 100। It comes around to be 5 crores 72 lakh। मतलब 130 करोड़ पॉपुलेशन का सबका टेस्ट किया जाएगा तो लगभग 5 करोड़ 72 लाख कंफर्म केसेस आएंगे। Now let us calculate infection fatality rate or IFR, which is calculated by dividing total number of deaths, that is 939, by total number of incidents of confirmed cases, that is 5 crore 72 lakhs multiplied by 100, which will come around 0.016% or round off approximately 0.02%। मतलब कुछ भी नहीं, it is a negligible। It means there is only 0.02% chance of dying in India। From yesterday, we have 33,865 COVID cases out of a total of 280,900 total tested. That's 12% of Californians were positive for COVID. So we don't, the initial, as you guys know, the initial models were woefully inaccurate. They predicted millions of cases of death, not of prevalence or incidence, but death. That is not materializing. What is materializing in the state of California is 12% positives. Well, if we have 39.5 million people.
If we just take a basic calculation and extrapolate that out, that equates to about 4.7 million cases throughout the state of California, which means this thing is widespread. That's the good news. We've seen 1,227 deaths in the state of California with a possible incidence or prevalence of 4.7 million. That means you have a 0.03 chance of dying from COVID-19 in the state of California. A 0.03 chance of dying from COVID-19 in the state of California. 0.03 chance of dying from COVID in the state of California. Does that necessitate sheltering in place? Does that necessitate shutting down medical systems? Does that necessitate people being out of work? So when you say it's a usually quite mild disease, what do you mean by that? That most people who get it will never even notice they were infected. So does that mean that you think the actual fatality rate of this disease is much lower than the numbers that have been talked about? Much, much lower. So do you have you made any speculations as to what sort of zone the real fatality rate might be in? I think it will be like a severe influenza season, the same as which would be on the order of 0.1% maybe. Dr. Jay Bhattacharya is a Stanford University medical professor. He's been investigating the death rate from coronavirus, a fascinating and important number, and he joins us tonight. Doctor, thanks so much for coming on. What are you concluding about the real death rate, the actual death rate from this virus? I think based on the evidence I've seen so far, it's likely orders of magnitude lower than the initial estimates. The World Health Organization put an estimate out that was, I think, initially 3.4%. It's very unlikely that it's anywhere near that. It's much likely, much closer to the death rate that you see from the flu per case. So one of the destructive byproducts of this pandemic is fear, which is itself, I would say, it clearly is hurting people. You're an American, in addition to a physician and a researcher. Based on the research that you have done, are you more afraid or less afraid than you were when you began? I'm less afraid than I was when I began. I've heard so many stories of people who can't hug their grandkids, who are scared to hug because they don't want to get the virus from their kids because they're older. I've heard lots of stories of husbands and wives that won't hug each other because the wife is a nurse and the frontline worker. I think this understanding really the true death rate. If the death rate is somewhere near 1 in 1,000, would you not hug your wife? I mean, if it's 3 in 100, you act very differently than if. यदि आप रोज़ न्यूज़ में दिखाए जाने वाले बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों से डरते हैं तो ज़रा एक नज़र एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जो 2017 के टोटल आंकड़े थे उन पर देख लीजिए। मेल और फीमेल करके डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं, टोटल 4 करोड़ तक आंकड़े पहुंचे थे, आप देख लीजिए। तो इसलिए बढ़ते हुए आंकड़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अर्लियर वी वर फ्लाइंग इन द डार्क। सो इनिशियली जो इसका इमेज आया था, प्रोजेक्ट किया था कि बहुत डेडली डिजीज़ है, नाउ इट हैज़ बीन 5 मंथ्स। तो इन 5 मंथ्स में इतनी सारी रिसर्चेज आ गई हैं, सब लोग की स्टडीज़ आ गई हैं, एंड इसका मॉर्टेलिटी रेट आप देख रहे हैं बहुत कम है। डिजीज़ उतना डेडली नहीं है जितना सोचा गया था।